students, welcome back. I am here again for the subject Science Standard 7th, and we are going to start with a new chapter, chapter number 4, Heat. ये चैप्टर के अंदर हम पता करेंगे कि हीट जो है, what is heat and how we can going to measure it. So as you've seen in the last chapters, in chapter 3 you learned that woolen clothes are made from animal fibers. जैसे woolen clothes है जो animal fibers से बनते हैं, wool से बनते हैं, जो ship हमने पीछे fiber to fabrics में पढ़ा, ये जो ship के wool है उसके woolen कपड़े बनते हैं, and then we wear it in the winter season. So you also know that cotton clothes are made from plant fibers. अब जो plant fibers है उससे हम cotton के कपड़े पहनते हैं, जैसे cotton, जूट, वो सब जो है जूट के जो है हम गनी बैग जो है वो जूट के बनते हैं, और प्लांट फाइबर से जो कॉटन बनता है उससे कॉटन के शर्ट्स और कॉटन के कपड़े हम पहनते हैं. We wear woolen clothes during winters when it is cold outside. जब बाहर ठंडी रहती है तब हम वुलन कपड़े पहनते हैं कि उस बदन में हमारे को गर्मी महसूस हो. Woolen clothes keep us warm. We prefer to wear light colored cotton clothes when it is hot. अब जब बाहर गर्मी रहती है तो हम प्रिफर क्या करते हैं कि भाई एकदम हल्के कपड़े पहने कि हमारे को गर्मी नहीं लगे. एंड देन व्हाट वी डू, वी वेयर कॉटन शर्ट्स और समथिंग, वी वेयर शॉर्ट्स और थोड़ा खुला पहन के रहते हैं. क्यों? व्हाई? बिकॉज आउटसाइड इट इज हॉट, सो वी आर ऑल्सो फीलिंग हॉट. तो हमारे को ठंडा महसूस करने के लिए वी वेयर कॉटन क्लॉथ. वी प्रिफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज हॉट. This gives us a feeling of coolness. ये हमारे को क्या करता है? एक feeling of coolness आता है कि अच्छा लगा हमारे को, and we are feeling cool. You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. हर एक सीजन के अलग अलग कपड़े होते हैं. जैसे रेनी सीजन में हम पहनते हैं रेनकोट पहनते हैं, we take umbrellas. ठंडी के अंदर वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं, मफलर्स पहनते हैं, और रात को हम कंबल ओढ़ के सोते हैं. And then in summer we wear cotton clothes, light clothes. उससे क्या होता है कि हमारे को जो गर्मी लगती है वो गर्मी कम लगे और कूलनेस हमारे को फील हो. और तुमको पता चलता होगा कि ये क्यों हो रहा है. We are wondering why this happens. So in winter you feel cold inside the house. अब winter के अंदर you feel cold inside your house. बाहर ठंडक है फिर भी हम दरवाजा बंद है, चारों तरफ से दीवार है, फिर भी हमारे को घर के अंदर बैठ के ठंडक लगती है. So we wear woolen clothes inside. If you come out in the sun, you feel warm. अब जब sun के अंदर ठंडी लगी हुई है, जब बाहर sun में आएंगे हम तो हमारे को लगेगा we feel warm, अच्छा लगेगा. In summer you feel hot even inside the house. How do we know whether an object is hot or cold? अब ये temperature हम देख रहे हैं. So how we are going to know कि such an object is hot, any object is hot or cold? ये हमारे को कैसे पता चलेगा? Now, अब जैसे हम देख रहे हैं कि एक साइड में हमारे पास चाय की एक ट्रे के अंदर चाय का कप पड़ा है. There is a cup of tea in a tray. उसके ऊपर से एकदम गरम वेपर निकल रहा है और एक साइड में आइसक्रीम रखा हुआ है. तो हमारी आँख देखेगी कि ये चाय जो है टी इज हॉट एंड आइसक्रीम इज कोल्ड. ये हमारी आँख देख रही है. So we can see it and tell it that it is hot and cold. Like अभी यहाँ पर एक दूसरी जगह हम एक फ्रूट्स रखे हुए हैं और दूसरी जगह पिज्जा रखे हुए हैं. So we can say that it is hot or cold. जब तक हमारे को फ्रूट के ऊपर हाथ नहीं रखेंगे वो ठंडा है, एंड पिज्जा के ऊपर हम कोई भी चीज के ऊपर हाथ नहीं रखेंगे कि वो गर्म है, we cannot see it. So उसको हमारे को टेस्ट करने के लिए हमारे को हमारा हैंड यूज करना पड़ेगा. We are going to use our hand. If we touch the fruit, it is hot or it is cold. It is cold. फ्रिज में से निकाला हुआ है तो ठंडा है. Okay, fine. पिज्जा जो हम हाथ लगा रहे हैं वो गर्म है. अब गर्म होने के बाद वो बाहर निकलने के बाद ठंडा हो गया. After the gap of some time. तो वो हमारे को आँख से नहीं दिखेगी. We feel that with hand. So एक एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं, जैसे एक टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है, एक एक्टिविटी है टेक्स्ट बुक के अंदर
कि एक साइड में गर्म पानी है, एक साइड में ठंडा पानी है, एक साइड एक बॉल के अंदर न ज़्यादा ठंडा है न ज़्यादा गर्म है, दोनों को मिक्स करके हमने रखा हुआ है. So now our chapter is hot and cold. In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot. Some of them are hot, and some of them are cold. Tea is hot and ice is cold. So वहाँ टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है list some objects you use commonly in table 4.1. Mark these objects as hot or cold. So do not touch objects which are too hot. Be careful. तो ज़्यादा गर्म होगा तो वो हाथ जल जाएगा and it will harm you. Be careful while handling a candle flame or a stove. We see that some objects are cold while some are hot. कोई objects ठंडा है और कोई objects गर्म है. You also know that some objects are hotter than other. Some objects while some other are colder than others. एक चीज गर्म है, एक चीज hot है. Another thing is hotter than that. So उसके अंदर भी differentiate हमारा करना पड़ेगा. So for that we can't say, we can't touch and we can't feel it. उससे feel हम करेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा और उसके बगैर हमारे को पता नहीं चलेगा temperature के बिना. How do we decide which object is hotter than the other? We often do it by touching the objects, but is our sense of touch reliable? हमारा जो सेंस है रिलायबल है. अब उसकी हमारे को टेस्ट करना है. तो एक्टिविटी किया हुआ है. टेक 3 लार्ज मग लिए. एक के अंदर हॉट वाटर लिया, एक के अंदर कोल्ड वाटर लिया, एक में हम कोल्ड और हॉट वाटर दोनों मिक्स करके रखे हुए. नाउ व्हाट यू हैव टू डू. सो मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड. नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए. लेफ्ट हैंड मग ए के अंदर रखा हॉट वाटर के अंदर. राइट हैंड मग बी में रखा कोल्ड वाटर के अंदर. एक आध मिनट रखा. कीप इट फॉर 1 minute. आफ्टर कीपिंग इट फॉर 1 minute, व्हेन यू रिमूव योर हैंड, अब ये हाथ के अंदर हमारे को हॉट था और ये हाथ में राइट में हमारे को कोल्ड वाटर था. अब यही जो है दोनों चीज हम अगर जो मिक्स किया हुआ पानी है उसके अंदर रखेंगे, डालेंगे, तो जो हमारे को हाथ में कोल्ड वाटर रखा हुआ था, जो हाथ कोल्ड वाटर में मग ए में रखा था, वो उस पानी के अंदर डालेंगे तो हमारे को एक रिलैक्सेशन फील होगा कि ये पानी ठंडा है. अब ये हाथ जो ठंडे पानी के अंदर था उसको वो पानी के अंदर डालेंगे तो हमारे को ये हाथ फील करेगा कि ये पानी गर्म है. तो दोनों, हालांकि राइट नाउ बोथ द हैंड्स हैव सेम सेंस बट डिफरेंट हमारे को महसूस हो रहा है. वी अंडरस्टैंड दैट ये हमारे को ठंडा लग रहा है और ये हमारे को गर्म लग रहा है. सो ये हैंड की टचिंग बाय हैंड टू सी द टेम्परेचर, टू सी द कूलनेस इज रिलायबल? नो, इट इज नॉट रिलायबल. सो ये कंफ्यूजन हो रहा है. सो वी कैन नॉट से एग्जैक्टली दैट अ थिंग इज हॉट और कोल्ड बाय फीलिंग द हैंड. नाउ कैन यू यूज अ हैंड ऑन द फायर? फायर के ऊपर हाथ यूज कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट यूज इट. वेयर फूड, मिल्क और सम कुकिंग इज डन, कोई गैस के बर्नर पर हम घर के ऊपर जो मम्मी अगर किचन में कुकिंग करती है तो उसके ऊपर हम हाथ रख के टेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये गर्म है. नो, वी कांट डू इट. सो योर हैंड विल बर्न. सो वी कैन नॉट से दैट ऑल द टाइम बाय जस्ट विद योर हैंड्स. खाली हाथ से हम फील करके बताएंगे दिस इज हॉट एंड दिस इज कोल्ड, इट्स इनफ. लेकिन all the time we cannot touch our hand. फ्लेम के ऊपर हाथ रखने जाएंगे तो हाथ हमारा जल जाएगा. और किसी चीज बर्फ के अंदर हाथ डालेंगे, ओके फाइन, इट्स कोल्ड, बट फ्लेम पे हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ जलेगा. सो विल हर्ट आवरसेल्फ. सो हैंड इज not a reliable method always for judging whether an object is hot or cold. You cannot touch everything with your hand. You cannot touch everything with your hand. It does not give you accurate result. Accurate result हमारे को hand feeling by touching by hand does not give you accurate result. और it misleads you और mislead करेगा. जैसे अभी हमने दोनों हाथ गर्म में रखा था, एक ठंडे पानी में रखा था, अब यही निकाल के जो मिक्स किया हुआ पानी था उसमें रखा तो दोनों की फीलिंग, दोनों की जो फील थी हाथ में टच हुई, वो दैट इज
हमारे को एक मिसलीड कर रहा है कि ये पानी, ये हाथ हमारे को कह रहा है कि जो गर्म में था वो ठंडा लग रहा है और जो ठंडे कोल्ड वाटर में था वो गर्म लग रहा है. So it misleads us. So then how we can find out how an object really is? So a reliable measure of the hotness of an object is its temperature. जो reliable जो है कोई भी ऑब्जेक्ट को मापने के लिए उसकी जो hotness है उसको measure करने के लिए वो temperature. Temperature is measured by a device called thermometer. Temperature किससे measure होता है? थर्मोमीटर जो डिवाइस होता है उससे मेजर होता है. नाउ सो मेजरिंग टेम्परेचर जो हमारा जो सेकेंड टॉपिक है, ये हमने हॉट एंड कोल्ड का अभी थोड़ा एक्टिविटी हमने किया. अभी मेजरिंग टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर है. अब क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसा होता है? Have you seen a thermometer? No, you have not seen. So we are going to make you see a clinical thermometer. अब जैसे ये हमारे हाथ में clinical thermometer है. अब ये thermometer हम देखते हैं. So if you look like this, if you see like this, आपको ये clinical thermometer यहाँ पर एकदम नीचे सिल्वर जैसा लगेगा. उसके बीच में ये ग्लास ट्यूब है. ये ग्लास ट्यूब है. ये ग्लास ट्यूब के ऊपर जो है ऊपर टेम्परेचर सेल्सियस में रहेगी और नीचे का टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में रहता है और बीच में पतला सा एक थ्रेड रहता है. और ये कॉर्नर कैसा रहता है? यहाँ पर देखो ये बेंड रहता है और ये बेंड होने के साथ में यहाँ पर ये देखना एक क्रॉस और एक बेंड किया हुआ वहां पे किंग जैसा उसका रहता है. I'll explain you why this is there. Clear? Okay. Now, so हम कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे को क्या करता है कि भाई हमारे को बुखार है. So what will you do? वो थर्मोमीटर, यही थर्मोमीटर लेगा, उसको हमारे मुंह में डालेगा, टेम्परेचर देखेगा और टेम्परेचर देखने के बाद बोलेगा कि yes, you are having a fever or you are not having a fever. So what we do to check the temperature, how do we find? So a reliable measure of the hotness of an object is its temperature. And to measure degree of hotness, what? Degree of hotness or coldness. Degree of hotness or coldness is called, यानी ये डिग्री जो है, जैसे अभी टेम्परेचर हम देखते हैं कि भाई आज 39 डिग्री है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड है. कभी सुनते हैं भाई आज बहुत गर्मी है तो 41 डिग्री है. अब ठंडी के मौसम में हम देखते हैं कि भाई कभी कभी हमारे को मैसेज आता है, when we watch the TV तो बोलते हैं it's too hot and temperature is 14 डिग्री सेंटीग्रेड. अब ये 14 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये we feel hot, cool, हमारे को ठंडी महसूस होती है. 39 या 35 ये डिग्री जो है ये एक मीडियम टेम्परेचर है. ये हॉट है, ये 41 हॉटर है. 45 डिग्री 47 डिग्री जो होते हैं वो डेजर्ट के अंदर वो बहुत हॉट होता है. सो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड measure. Clear? Degree of hotness or coldness of an object is called wait, mistake, there's mistake. It's called its temperature. और ये टेम्परेचर को मेजर करने के लिए the instrument is thermometer, clinical thermometer. Clear? So clinical thermometer ये जो है ये clinical thermometer है. और एक थर्मोमीटर और होता है जिसको बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर. अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैसा होता है? हम लैब में देखते हैं, इट इज लाइक दिस. सी
मर्क्यूरी रहता है, और बीच में जो थ्रेड जैसा रहता है उसके अंदर मर्क्यूरी जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ते जाता है, एंड हियर इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस डिग्रीज। एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर में सेल्सियस डिग्रीज भी मेजर होते हैं जो 35 to 43 होता है, और ये फ़ारेनहाइट जो मेजर होता है वो 95 to 110 फ़ारेनहाइट होता है। सी इट इज एग्जैक्टली, ये ऊपर जो है फ़ारेनहाइट है और ये जो है सेल्सियस डिग्री है। क्लियर? So recall that when you and or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. The thermometer that measures our body temperature is called a clinical thermometer. हमारे body temperature को जो measure करता है उसको clinical thermometer बोलते हैं. So hold the thermometer, जैसे अभी हमने किया in your hand and examine carefully. हमने examine भी किया. If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you. A clinical thermometer looks like the one shown. Clinical, ये छोटा वाला जो है इसको हम clinical thermometer बोलते हैं. So a clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. ये long है, narrow है, और यहाँ से एकदम uniform. Uniform यानी एक ही size का. Clear? So it has a bulb at one end. अब ये जो है इसको हम bulb बोलते हैं. What we say it is called as bulb. This bulb contains mercury. Outside the bulb, इसके अंदर ये जो सिल्वर कलर का रहता है, हमारे को लग रहा है ये इसके अंदर mercury रहता है. Outside the bulb, a small shiny thread of mercury can be seen. अब जैसे यहाँ पर हमने देख रहे हैं कि एक small एकदम बारीक धागे जैसा रहता है, tiny thread, so contains mercury. If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. You will find a scale on the thermometer, जो अभी हमने देखा उस scale thermometer के ऊपर. The scale we use is the Celsius scale, indicated by the degree C, like this. This one, this is called as degree, and the Celsius. Now the activity was there, reading a thermometer. अब ये जो हमने अभी reading a thermometer, ये हमारी activity है. So let us learn how to read a thermometer. First, note the temperature difference indicated between the two bigger marks. Also note down the number of division shown by smaller marks between these marks. Suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 divisions between them, then one division can be read as 1/5. अब जैसे हम स्केल के अंदर देखते हैं कि this is 1 and this is 2. अब ये सेंटीमीटर 1 रहता है और ये 2 सेंटीमीटर रहता है. अब ये दोनों सेंटीमीटर के बीच में मिलीमीटर कितना रहता है? 10 रहता है. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ये 9 और ये 10 होता है. क्लियर? अब ये 10 मिलीमीटर मिलके 1 सेंटीमीटर बनता है. So like that, in this clinical thermometer, the difference between 1 degree to 2 degree is 10 parts is given as there. So each part is 0.1 degrees Celsius. Clear? A clinical thermometer, why this used? It measures our body temperature, which is called as, that is why it is called as clinical thermometer. अब ये ग्लास ट्यूब है जिसको फ्रंट में इसको हम बल्ब बोलते हैं. बल्ब साइज रहता है, बल्ब रहता है, और जो नैरो इसके अंदर बीच में रहता है उसको किंग बोलते हैं. आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाई दिस इज गिवन एज किंग.
क्योंकि ये नैरो में कैसा किंग जैसा बीच में दिख रहा है ऐसा करके, सो दैट इज कॉल्ड एज किंग. So its scale is 35 to 42 degrees centigrade. Fahrenheit में scale क्या होता है? 94 to 1110 degree Fahrenheit. So each division is 0.1 degree centigrade. And how it works? It measures the heat from a body. Body से measure करता है and then it shows the temperature. हमारे को degrees बताता है. So now how we are going to use that thermometer? Wash the thermometer with some antiseptic solution and then wash the thermometer, preferably with an antiseptic solution. Hold it firmly and give it a few jerks. इसको हमने antiseptic solution में डाल के इसको धोया. We hold it and then we jerk it. Why? बिकॉज जो मर्क्यूरी जो ऊपर चला जाता है वो नीचे बल्ब में आके जमा हो जाता है, और जो बीच में जो किंक रहता है वो जैसे हम टेम्परेचर किसी मतलब कोई पेशेंट के मुंह में रखते हैं 1 or 2 मिनट्स, तो वो टेम्परेचर मर्क्यूरी जो है वो ऊपर रेज करता है. वाई? जो बॉडी की हीट है वो हीट इसको यूज इसके ऊपर आती है और ये मर्क्यूरी राइज होता है, और जहाँ तक राइज होता है वहाँ तक वो डिग्री हमारे को दिखाता है. अब राइज होने के बाद क्या होता है, अगर ये किंक नहीं रहेगा तो हम जहाँ से जो सोर्स है, जो पेशेंट का माउथ है वो हीट है, उस सोर्स से हम निकालेंगे तो मर्क्यूरी नीचे आ जाएगी. अब वहाँ तक परफेक्ट टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ये बीच में किंक दिया हुआ है. अब ये किंक इसके लिए दिया हुआ है कि वहाँ मर्क्यूरी जहाँ तक टेम्परेचर जाना चाहिए, जो पेशेंट की बॉडी टेम्परेचर है वहाँ तक पहुँचेगा, देन इट स्टॉप्स और नीचे वापस नहीं आने देगा. अब नीचे आने के लिए उसको जर्क करना पड़ेगा. इसके लिए हम मेजर करने के लिए वी हैव टू जर्क इट. क्लियर? सो वॉश द थर्मोमीटर preferably with an antiseptic solution. Hold it firmly and give it a few jerks. The jerk will bring the level of mercury down. Ensure that it falls below 35 degrees centigrade. It falls below 35 degrees centigrade. Now, can you tell me the body of a human body temperature, वो जो है normally कितना होता है? 37 degrees centigrade होता है. Now, place the bulb of the thermometer under your tongue. After 1 minute, take the thermometer out and note the reading. This is your body temperature. The temperature should always be started with its unit degree centigrade. So what did you record as your body temperature? The normal temperature of human body is 37 degrees centigrade. Human body का जो भी normal temperature होता है, so normal temperature is 37 degrees centigrade. ये human body का normal temperature होता है. ये थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा कम होता है. So if you stand in the sun, if you are walking, if you are doing some work, so body temperature rises a bit. If you are not doing anything, sitting in an AC room and doing nothing, when you sleep, your body temperature decreases below 37 degrees. A normal temperature is being measured as 37 degrees centigrade. Clear? Now, so there was an activity given in your textbook. To measure the body temperature of some of your friends, at least 10, with a clinical thermometer. Record your observations in table 4.2. Is the body temperature of every person is 37 degrees centigrade? You will find it different. So temperature of every person may not be 37 degrees centigrade. It should be slightly higher or slightly lower. Actually, what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy person. कोई भी एवरेज, अब हमारे को एवरेज निकालना है तो बहुत सारे पब्लिक पीपल का
उसका एवरेज निकालेंगे. So 37 degrees centigrade is an average temperature. A clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. Human body के लिए खाली वो clinical thermometer डिजाइन किया हुआ है और इसकी जो 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका मेजरमेंट थर्मोमीटर में दिया रहता है. The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. The temperature of human body normally does not go below 35 degrees or above 42 degrees centigrade. That is the reason that this thermometer has the range 35 degrees to 42 degrees centigrade. Now next is laboratory thermometer. But this laboratory thermometer we are going to do in part 2. Till here we have done for a part 1. So as a small summary, we are going to understand what is clinical thermometer. It measures our body temperature. The clinical thermometer has a glass tube and a bulb and a king. The measurement is given in 35 degrees centigrade to 42 degrees centigrade. Fahrenheit scale जो है 94 till 110 degrees Fahrenheit, and each division has 0.1 degree. Each division has 0.1. And how it works? It absorbs heat from the body. Mercury rise होता है mercury. So measures the body temperature. Has long, narrow, uniform glass tube. Has bulb at one end. The bulb contains mercury. King जो bend होता है उसको king बोलते हैं. Outside bulb, a small shining thread of mercury can be seen. Range of temperature is from 35 degrees to 42. 10 divisions between 1 degrees. And why king? Average temperature in human body 37 तो does not kilo. और ये king इसके लिए रखा जाता है कि flow of mercury does not go back. So it helps to read the temperature of a patient accurately. और उसके precautions हम क्या लेते हैं? इसको precautions हमारे को इसको धोना पड़ता है. इसको we have to wash it with antiseptic solution. Ensure that temperature measure देखने के लिए we have to make it very straight and then we have to check it properly. Okay students, have you all understood this clinical thermometer? In the next part we are going to start with the